Hello and welcome back all the viewers on my YouTube channel. So let's start with the other concept. We have already talked about the electric current and the Ohm's law, as well as we have talked about the resistance. So we'll have a just recap of the word resistance or what this term is known as, okay? So we all know that the flow of the free electrons through a conductor that leads to a current. But these electrons, the free electrons, they are colliding with the molecules of that conductor. And that leads to the hindrance or that creates an opposition to the passage of the electric current. And that leads to the resistance. We all know that this resistance, it depends on the dimensions of that conductor, as well as it depends on the other factors like the temperature. Now, our today's topic is the specific resistance, or it is also known as the resistivity. It measures the resistance of the conductor only. So for this, we have to consider that when the temperature and the nature of material of conductor remains same, the resistance of the conductor depends on one, that is length of that conductor, and it is observed that the resistance of the conductor is directly proportional to its length. What does it means? That means that अगर resistance बढ़ा दिया, resistance बढ़ेगा when the length is increased or vice versa. Length decrease हो गया तो resistance भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है. This is straightforward meaning of directly proportional. Okay, तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल अगर कंडक्टर के सेम रहने देंगे तो लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से. सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Then how this resistance depends on the area of cross section. So basically it is inversely proportional to the area of cross section. What does it mean? मतलब area cross section बढ़ गया तो resistance की वैल्यू कम होने वाली है, and vice versa because it is inversely proportional to the क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर मैथमेटिकली हमें ये एक्सप्रेस करना है तो लेट्स कंसिडर L इज द लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस is directly proportional to the length upon the area. Okay, now proportionality sign remove करना है हमें, तो we need to take some constant, and here we have taken that constant as rho, and that rho is the constant of proportionality. It is called as the resistivity or the specific resistance of the conductor, and it depends on nature of the conductor and the temperature. This resistivity and specific resistance, yes, they also measure the resistance of the conductor. Now मान लो कि if area of cross section अगर हमने consider किया conductor का, that is equal to 1 meter square, length है 1 meter, then the value of specific resistance or the resistivity, that is equal to the resistance which is offered by that conductor. Okay, so आपको यही ध्यान में रखना है कि resistivity or specific resistance that measures the resistance of the conductor only. So specific resistance of the material is the resistance of that material having unit length and unit cross section area. This is the definition of specific resistance or resistivity of the material.
क्या है बेसिकली? इट मेजर्स द रेजिस्टेंस. सो इट्स द resistance of that material which has a unique length and the unique cross sectional area. ये resistance है, so yes, we can measure it, right? And the unit of this resistivity is ohm meter. Okay, तो बात समझ में आ गई कि specific resistance of material is the resistance of that material having unit length and unit cross sectional area. Formula है rho is equal to R into A upon L, and the unit of rho is ohm meter. और ये आपको ध्यान में रखना है कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेजर करते वक्त all the other conditions like the dimension and the temperature of that conductor, that should remain same, that should not change. Okay, so this is about the resistivity or the specific resistance. Now another term जो है that is conductance. तो कंडक्टर, ये वर्ड तो हमें पता है, दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कंडक्टेंस क्या है? सो इट इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल. ओके, एंड इज द मेजर ऑफ हाउ ईजीली दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज along a certain path through an electrical element. बहुत सीधा है डेफिनेशन कंडक्टेंस का कि हर एक मटेरियल जो होगा वो अलग अलग एलिमेंट से बना होगा. तो ईच कंडक्टर विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंडक्टेंस. बराबर है? सो स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, या दे आर ऑल आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. या देयरफॉर देयर कंडक्टिविटी विल वैरी. या तो यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस क्या मेजर करता है कि कितने इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू दैट कंडक्टर इज नथिंग बट दी कंडक्टेंस. ओके, सो आपको ध्यान में रखना है कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज along a certain path through an electrical element. And since electricity is so often explained in terms of opposites, conductance is considered the opposite of that of the resistance. So simple hai, conductance is the resistance, is the reciprocal of resistance. Okay, both are opposite to each other. कंडक्टेंस के अपोजिट क्या हो गया वर्ड? रेजिस्टेंस. बिकॉज रेजिस्टेंस क्या है? इट्स द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. और उसके एग्जैक्टली अपोजिट कंडक्टेंस का मतलब क्या है? कितने इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होगा. तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम. तो 1 अपॉन ओहम, और ओहम पर अब ऐसे भी बोल सकते हो, और द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मैहो. उसका ओहम का उल्टा साइन जो है वो उसका साइन होने वाला है. ओके, सिंपल है कंडक्टेंस ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस. सो हमने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर that depends on the length of conductor, size of the conductor, cross sectional area, and it also depends on the temperature of that conductor. बराबर है? Now what will happen if there is a variation in the temperature? आपको ये भी ध्यान में रखना है कि each conductor will behave different to the response of the temperature. Okay, because मैंने पहले भी बोला कि हर एक कंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट एटम से बना होगा. तो उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट भी जो भी होने वाला है दैट विल ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मटीरियल ऑफ विच दैट इज मेड अप ऑफ. सो पहला, कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस बढ़ गया. कब बढ़ गया?
टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब ज़्यादा अपोजिशन होगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिकल करंट को ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, अपोजिशन होगा थ्रू दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो ऐसा बेसिकली क्यों होता है? तो हमें पता है कि whenever there will be a rise in temperature, जो आयंस होंगे, बराबर है, उस मॉलिक्यूल के और उस एटम के, ओके, they will start vibrating. Why they will start vibrating? Because they gained the energy, बराबर है। जो भी आयंस होंगे of a particular molecule, they will acquire the energy, heat energy यहाँ पे, because हम temperature बढ़ा रहे हैं। As they acquire that heat energy, the ions will start vibrating. Vibrate होने से क्या होने वाला है? They will collide with their neighboring ions or the molecules. अगर वहाँ पे उनमें से ही collision start हो गया and they will collide or they will vibrate along their mean position. So अगर उनका vibration start हो गया along their mean position, they will collide. collide होने की वजह से क्या होने वाला है? There will be creation of hindrance, बराबर है। एक तरीके से क्या होने वाला है? अपोजिशन होने वाला है to the free flow of these free electrons through the conductor। समझ में आ गया? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव ही नहीं हो सकते हैं थ्रू दैट कंडक्टर, दैट विल ऑब्वियसली disrupt the flow of the current and that increases the resistance। resistance का मतलब क्या है? opposition to the electrical current। तो ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? ions, they are getting the energy, they start vibrating along their mean position, they collide with the neighboring ions or the molecules or the atoms, बराबर है। that creates the opposition to the flow of the current, and this therefore increase in temperature increases the resistance। So we can say resistance and temperature both are directly dependent on each other। temperature बढ़ेगा तो resistance की value भी क्या होने वाली है? हाई होने वाली है। ओके, दिस इज अबाउट द गुड कंडक्टर्स। ओके, द मटेरियल्स विच बिहेव लाइक द गुड कंडक्टर। पर in case we are talking about the bad conductors of electricity, then what will happen? So obviously resistance will decrease with increase in the temperature। Got the point? Now why this is कि bad conductors of electricity है, that means highest opposition होगा to the flow of the electricity। Now bad conductors of electricity है, बराबर है। So in case of the bad conductors of electricity, if we'll talk about the atomic structure, first there is absence of free electrons, and second thing is the electrons are very strongly connected to the nucleus। There is a strong force of attraction between the nucleus and the electrons। Now with increase in temperature क्या होने वाला है? That leads to the breaking the bond between the valence electrons and the nucleus। Now as these electrons are getting free, that leads to the flow of these electrons, and that leads to the flow of the current, and that will decrease the resistivity
So in this way, with increase in temperature, the resistance will decrease for in case of the bad conductor. So this is about the resistance, specific resistance or resistivity, and the effect of temperature on the resistance. I hope your concepts about these topics is clear now. If you like the video, please share with your friends. Please press the bell icon for the new updates and do subscribe the channel. Thank you.